Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Stay home, stay safe. In previous two videos, we learned about basic of coordinate geometry and distance formula with some examples. Our today's topic is section formula and midpoint formula, and also centroid formula is there. But in this video, we are going to learn section formula and midpoint formula. Before this, we have to revise some things. In your last standard, you learned one corollary of similar parallel lines. Is that corollary? If three lines are parallel to each other and two transversals or one transversal is also enough. Take two. L and N are three parallel lines. P and Q are transversals. See, in that time, suppose this transversal intersect these three lines in some distant points. In this, see here, suppose this is section A, this is section B, this is C and this is D, or M and N. That time C upon D equal to A upon B, means distance between these two lines upon this two line is equal to distance between these two and these two. Okay, means क्यों ऐसा है, क्योंकि पैरेलल लाइन का डिस्टेंस यहाँ पे जितना होता है उतना ही यहाँ पे होता है, उन बीच में सेम डिस्टेंस होता है at any point. Therefore, that two lines are parallel lines. This is the basic concept of parallel lines. For that, now our formula for section formula. Section means division. Section formula. Okay, see here. We have to firstly understand how that formula form. Suppose this is your coordinate system. This is your coordinate system, and this is your segment PQ. Segment PQ, and M is the point. M is the point which divides this segment into two parts, M and N. M is to N, M is to N, 2 is to 3, like this. Means M parts and N parts. This 2 is to 3 means 2 parts and 3 parts out of 5. Out of 5, 2 parts, out of 5, 3 parts. Like that, M and N. Total parts are M plus N, like that. Take this point x1, y1, this x2, y2, and we have to find coordinates of this point M, which is section point, that are x and y. This is your x-axis, this is your y-axis, and this is your origin. See, if we draw perpendiculars to x-axis from all these points, suppose this is point C, this is point D, and this is point E. Okay, all these are perpendiculars because हमने फर्स्ट टाइम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ग्राफ प्लॉट किए थे 9th स्टैंडर्ड में, तब मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि आपको 2, 3 ऐसा पॉइंट लेना है तो आपको
सेकेंड से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है और 3 पे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा। ऐसे मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड में ही बताया था। ओके, नाउ सी ऑल these perpendiculars are parallel to each other, means PC is parallel to MD, parallel to QE. Now decide coordinates of these 3 points. These points are on x-axis, means their y coordinate is always 0 and x coordinate is same as these points. यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है इनका x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन इनका y कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है क्योंकि ये पॉइंट्स x एक्सिस पे पॉइंट आउट है। ओके, मींस x1 0 is the coordinate of C, x0 is coordinate of D and x2 0 is the coordinate of Q. Okay, firstly find out distance between CD and distance between DE, also distance between PM and distance between QN। देखो आपकी जो मैंने पहली डायग्राम ड्रॉ की थी वैसी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल लाइंस की लेंथ कम ज्यादा है। आपकी एक ट्रांसवर्सल ऐसी है, एक स्ट्रेट है। यहाँ पे आपके पॉइंट से मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ ये कैसे लिए C, D एंड E। यहाँ पे आपका है P, M, Q, मीन्स आपका PM अपॉन MQ इक्वल टू CD अपॉन DE ऐसे आने वाला है, बराबर है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, फॉर दैट फर्स्टली फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू CD। CD यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, मींस CD का डिस्टेंस होगा x माइनस x1 एंड DE के लिए डिस्टेंस होगा x2 माइनस x, DE and CD। ओके, PM एंड MQ का डिस्टेंस देख सकते हो आप। PM का डिस्टेंस जो होगा वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, यहाँ पे होगा x2 माइनस x and y2 minus y, like that। Means you have to use here property of division of 3 parallel lines with 2 transversal। Okay, now see here your PM upon QN, PM upon QN equal to CD upon DE equal to M upon N equals to M upon N। According to our parallel line, according to our parallel line and transversal. Now see only this part, you have to consider only this part, CD upon DE. What is the CD? CD is x minus x1, x minus x1 upon DE is x2 minus x equal to m upon n, equals to m upon n. Now n x minus 1 equal to m by cross multiplication 2. Okay.
then nx minus nx1 equal to mx2 minus mx. Okay, see, nx minus nx1 equal to mx2 minus mx. Now nx plus like terms mx equal to mx2 plus mx1. X will common here, m plus n or n plus m. X equal to m x2 plus n x1 upon m plus n. मीन्स ये जो है ये इस सेक्शन पॉइंट का, अगर आपको इस सेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इसका डेरिवेशन मैंने पूरा यहाँ पे बताया है। मीन्स ये फॉर्मूला तैयार कैसे हुआ है, देखो यहाँ पे हमने पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला यूज किया है। फर्स्टली वी ड्रॉन अवर एक्चुअल सेगमेंट PQ which is divides into m is to n parts at point m. Okay, coordinates of P is x1 y1, Q is x2 y2 and section point M is x y. Then this is the perpendiculars, these all are the perpendiculars. See, all points are lies on x axis, therefore their y coordinates are 0. Y coordinates of all are 0 and x coordinates are similar to above points. Means P, C, that is x1, then x and x2. CD हमारा फॉर्मूला क्या है, हम क्या करते हैं, ग्रेटर से स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी y 0 है तो प्रॉब्लम कुछ सवाल ही नहीं उसका, इसलिए हमने क्या किया है, डायरेक्टली CD डिस्टेंस जो है x माइनस x1 लिया है और इन दोनों के बीच का x2 माइनस x लिया है। क्यों लिया है, सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे 6 है और 7 है, तो यहाँ पे हम कैसे मेजर करेंगे, 4 minus 2 means 2 centimeter distance, 6 minus 4 means also 2 centimeter distance. Like that we only subtract our x coordinates from greater to smaller. Okay, then by our parallel line and transversal property PM, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है ऐसी, मीन्स ये जो पार्ट होगा वो यहाँ पे सेम होगा और ये जो होगा वो यहाँ पे सेम होगा। PM upon QN equal to CD upon D equal to M upon N because its two parts are M and N. ओके, यहाँ पे हमने सिर्फ ये जो साइड है वो कंसीडर किए क्योंकि हमारे पास इसका डिस्टेंस है, हमने वैल्यूज पुट किए और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आया। अब आप बोलोगे कि मींस ये सिर्फ x कोऑर्डिनेट हुआ, अब y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट का भी डेरिवेशन ऐसे ही मिलता है सिमिलरली, सिर्फ आपको फिर ऐसी वाली लाइन लेनी पड़ती है, लेकिन हम डायरेक्टली y कोऑर्डिनेट्स लेंगे m y2 plus n y1 upon m plus n. These are the y coordinates. Means x coordinate आपको डायरेक्टली ये लेना है एंड m and n के वैल्यूज क्या करने हैं, हमें जो डिवीजन दिया होगा उन्होंने वैसे लेना है, 2:3, 4:4, 4:5, 1:3, like that. m is 1 and n is 3. Understood? Okay. With this same we derive our midpoint
with the help of same. Midpoint formula means for see, suppose your segment is AB, and this is P. P is midpoint of this, means AP equal to PB, means parts are 1:1, same parts are na 1:1. सपोज AB, टोटल AB जो है वो 6 सेंटीमीटर का है और P इसका मिड पॉइंट है, मीन्स AP is 3 and PB is 3. यहाँ पे जब हम डिवीजन देंगे तो AP अपॉन PB इक्वल टू 1/1, मीन्स 1:1 है, मीन्स M is 1 and N is also 1 और M and N are equal. ऐसे भी आप बोल सकते हो. यहाँ पे हम लिख देंगे P is midpoint, therefore M equal to N, M and N. Okay, now see our X and Y coordinates. हमें यहाँ पे अब X and Y coordinate डिसाइड करने हैं. इसके सेक्शन फॉर्मूला ही है ये, लेकिन ये इक्वल पार्ट में सेक्शंस बने हैं. तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के लिए हम हमारा फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं. mx2 plus nx1 अपॉन m plus n. y कोऑर्डिनेट के लिए हमारा फॉर्मूला है mx2 plus nx1 y1 upon m plus n. Okay, see here m x2 plus n x2 upon m plus n. M and n are same, therefore n is equal to m. यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिया है तो इसलिए मैंने n की जगह पे m की वैल्यू पुट की है. वैसे ही यहाँ पे भी है m plus n. तो यहाँ पे क्या होगा देखो, mx2 plus nx2 अपॉन 2n. यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं n की जगह पे m. यहाँ पे भी मैंने n की जगह पे m दिया है. ओके, तो यहाँ पे देखो m कॉमन फैक्टर आएगा. m इज द कॉमन फैक्टर. ये जो है x पॉइंट के लिए m इज द कॉमन. x2 plus x1 अपॉन 2m. m will get cancel. x coordinates are x2 plus x1 upon 2, and for y m is also common here. y2 plus y1 upon 2m. Again m will get cancel and y2 plus y1 upon 2 is your y coordinate for midpoint. अंडरस्टूड. तो हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, लेकिन पहले ये कैसे आया समझ लो. यहाँ पे जो सेक्शंस हुए वो सेम सेक्शन है, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट. P इज मिड पॉइंट मीन्स M इक्वल टू N. और हमने X ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए हमने जो पहले डेरिवेशन में x एंड y के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला डिटरमाइन किया है, वही हम यहाँ पे mx2 plus nx1 m plus n. अब यहाँ पे आप n की जगह पे m भी फिल कर सकते हो, नहीं तो m की जगह पे n. तो मैंने n फिल किया है इंस्टेड ऑफ n. m फिल किया है इंस्टेड ऑफ n. mx2 plus mx1 upon m plus m
here mx2 plus mx1 and this is 2m, similarly like that. ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूले लिखेंगे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट के लिए. सेक्शन फॉर्मूला, this is the summary of two derivations. X coordinates are mx2 plus nx1. आप यहाँ पे x1 भी लिख सकते हो और यहाँ पे x2 लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. And y coordinate is my2 plus ny1 upon m plus n. Midpoint formula, midpoint formula के लिए है x is x2 plus x1 upon 2 and y is y1 plus y2 upon 2. Is the summary of two derivations and you have to use these two formulas for our examples. Okay, one more derivation is there, centroid formula derivation. Firstly, tell me what is the meaning of centroid? What is the meaning of centroid? Centroid is the point in which concurrence point of centroid is the concurrence point of all medians of triangle. 8th में आपने medians draw किए हैं, 9th में भी हमने सर्कम के लिए medians draw किए थे. मीन्स जो आपके median ये, suppose this is your triangle, centroid formula. A, B, C. Median means for midpoint of BC is a P, midpoint of AB is suppose Q, and AC is suppose R. Okay, you have to draw segment opposite from opposite vertex to line. Like this. And this is your centroid G. Centroid G. And what is the division? Division is 2 is to 1. Means vertex की साइड का जो पार्ट होता है वो 2 टाइम्स होता है और लाइन की साइड का पार्ट होता है वो सिंगल होता है. दिस इज 2 1, दिस इज 2 1. समझ में आ रहा है? जो वर्टेक्स की साइड का पार्ट होता है वो डबल होता है एंड जो नीचे का पार्ट होता है मीन्स जो बेस लाइन के साथ जो पार्ट आता है वो क्या होता है, हाफ पार्ट और स्मॉलर पार्ट होता है. तो उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे. हमें फॉर्मूला डिराइव करना है इसके लिए, लेकिन अब डेरिवेशन नहीं लिखेंगे हम. आपने सेक्शन फॉर्मूला भी देखा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी देखा है, तो आपको समझ में आया है कि सेक्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पे CQ जो सेगमेंट है इसका G सेक्शन पॉइंट है. मीन्स हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 एंड दिस इज xy. तो हम डायरेक्टली ही फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं. फॉर x is x1 plus x2 plus x3 upon 3 and for y this is y1 plus y2 plus y3 upon 3. See, this is your point, first point x1 y1 x2 y2 x3 y3 and your G is xy
और इस यही कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए। मीन्स अगर हम ये ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो जी पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट्स पे आएगा, ये इसका मीनिंग है। समझ में आया है? हमारा थ्री फॉर्मूलाज का डेरिवेशन देखा है हमने, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड योर सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अंडरस्टूड? ओके, we will take some examples in next